Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session we will be starting with a new topic of enzymes. Okay, so in this session we will be focusing mainly on the introductory part. So we will be mainly focusing on what is the basic concept of enzymes, what do you mean by a chemical reaction, and what are the different types, or rather the classification of enzymes. So these are the things that we will focus on. Okay, so let's begin. So starting with the introduction, now what do you actually mean by enzymes? Okay, so enzymes are the appropriate definition, or the appropriate synonym for enzymes will be biological catalysts. Okay, why biological? Because they are found in the human body, in the biological system. And why catalyst? Because they are acting as a catalyst. Okay, now what do you mean by catalyst? Whenever we are talking about a chemical reaction, I will be talking about what is a chemical reaction, the basic concepts about chemical reaction in this session only. So whenever we are talking about a chemical reaction, what is the basic concept behind a reaction? That there will be some reactants. They will be reactants are those which will be reacting with each other. Reactants are nothing but compounds, chemical compounds or chemical substances which will be reacting with each other. Okay, so since they are reacting with each other, they are the reactants, and as a result of that we will be getting products, okay, which are the results of the reactants reacting with each other. Okay, now in this conversion of reactants to products, there is a very important medium which is required, and that is the catalyst. So this catalyst is responsible to speed up the reaction. Okay, speed up the reaction means अगर उस कैटलिस्ट के बिना उस रिएक्शन को होने में 10 मिनट लग रहा है, तो अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, कैटलिस्ट के सहारे या कैटलिस्ट के साथ में वो रिएक्शन होने में मे बी 2 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा. सो वी आर सेविंग अराउंड 7 minutes of time, isn't it? So that is the need, or that is the importance of a catalyst, that it is speeding up the reaction rate, speeding up the time taken by the reaction to happen. ओके, तो यही सेम चीज एंजाइम कर रहा है इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस और इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स. ओके, so that's why it's known as biological catalyst. So that is the basic concept that you need to know about. Now let's see what they're saying over here. So another very important concept, or very important thing about enzymes is that they are protein in nature. Okay, so that is also a very important concept. So enzymes are biological molecules which are protein in nature. They act as catalysts and help complex reactions occur everywhere in life. Almost all enzymes are protein in nature. This is again a very important concept which I already mentioned as far as MCQ point of view is concerned. Okay, moving forward, there are some nucleic acids that behave like enzymes. Okay, like nuclease is there, RNase is there. Okay, over here they are talking about ribozymes. Okay, for example 23R RNA. So these are nucleic acids, but they are actually acting as an enzyme. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. Now I have talked about in details about structure of protein. Okay, what are amino acids, how they are forming bonds between forming peptide bonds between each other, and then leading to the formation of a polypeptide chain. These are all some things which I've already discussed in details. Okay, so this is how actually a fully formed protein looks like. So we have a sequence of different amino acids that are there. These are the abbreviations. So for example, LU stands for leucine, GLU stands for glutamine, CYS stands for cysteine, VAL stands for valine, like that. Okay, and these are the sulfide bonds that are present between the proteins. So this image is actually a very old image. We have seen it many times. Okay, moving forward, an enzyme, like any protein, has a secondary and tertiary structures too. So whenever I talked in details about protein structure, I mentioned that there are three main stages, or three main categories of protein structure. So it starts from primary structure, then we have secondary structure, then we have tertiary structure, and the last and final what we have is the quaternary structure. Okay, so see, this is the secondary structure. Secondary structure का दो ही types होता है, alpha helix and beta sheet. So this is just a brush up of the things that we already know. फिर वही secondary structure में जब sulfide bonds बनेगा तो वो हो जाएगा tertiary structure, and finally it will become the quaternary structure. Okay, again moving forward,
In a tertiary structure, we will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are met. So see, if this is the enzyme which is a protein, which is a, say for example, having a tertiary structure, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे folds दिखेगा. Okay, why? Because of the presence of the backbone, and these folds will actually form the active site of the enzyme. Now what is active site? This is again another concept which I will be talking about in details in the upcoming slides. So active site वही जगह है, site means जगह, location, okay, and active means something which is active, जो मतलब actively जो enzyme के काम में, enzyme का जो जो function है उसमें जो actively participate करेगा उसी को हम बोलेंगे active site. मतलब कि ये सोच लो कि एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम इज इनकम्प्लीट, एंजाइम अधूरा है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा. ओके, so this is actually the three-dimensional structure of how exactly the active site looks like and how exactly this. Now what is substrate? That is yet another very important concept. Substrate is the chemical compound or the chemical substance to which the enzyme will go and bind, or you can imagine it the other way around कि substrate आएगा और enzyme के साथ जुड़ेगा. जैसे ही substrate आके enzyme के साथ जुड़ेगा वैसे ही जो हमारा chemical reaction है it will be begin, it will start to move forward. Okay, this pocket is called the active site. An active site of an enzyme is a crevice or pocket into which the substrate fits. Exactly जो मैं already बोल चुकी हूँ. तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो देखो कि active site का जो structure है, structure यानी कि active site का जो shape है, जो we are able to visualize to the eyes, जैसा shape हमें दिख रहा है, substrate का भी shape एकदम वैसे ही है. Okay, and that is something important, that is something necessary rather, isn't it? अगर जो active site का जो shape है, say for example the active site is circular, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि वैसा सबस्ट्रेट वैसा एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ पाएगा, इजंट इट? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ही अलग है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. So that's why it's very important that if the shape of the active site is circular, the shape of the substrate also needs to be circular. Then only it will be able to go and bind with the active site. So here comes again a very important concept कि जो enzyme और substrate का जो binding होगा, एक दूसरे के साथ जो मिलना होगा, that is very much specific. ठीक है, ऐसा नहीं है कि active site है बोल के कोई भी substrate आगे जुड़ जाएगा उसके साथ, या फिर ऐसा नहीं है कि एक substrate है बोल के कोई भी enzyme आके उसके साथ जुड़ जाएगा. No, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक कि ये जो एंजाइम है वो सिर्फ इसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और कोई भी सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ेगा. Okay, so that is another very important concept that we need to know. Thus enzymes through their active site catalyzes reactions in the form of decreasing the reaction rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways. Okay, तो इसीलिए हम उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलेंगे. ओके, सो व्हाट आर द वेज, किस किस पॉइंट्स में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का डिफरेंस है. ठीक है, तो वो हम देखते हैं. सो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर, व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अगर हम पकड़ ले उसको हम 90 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस में भी अगर ले जाएंगे तो भी इट विल बी able to act or work. But if we talk about the enzymes which are present inside our body, now we all know that our normal body temperature is 37 degrees Celsius, isn't it? 36 या 38 इतना ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. ओके, सो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो ऑब्वियसली उसी लेवल ऑफ टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पाएगा, isn't it? Because it's a biological catalyst, it's present in the biological system inside our body, so obviously it will be able to tolerate that much body temperature only. Okay, ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 डिग्री वो टॉलरेट कर पाता है, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है then the enzyme gets denatured. Okay, what is denaturation? It's the breakdown or distortion of the structure of the enzyme. Okay, structure मतलब obviously since it's a protein, so structure मतलब obviously tertiary structure होगा या quaternary structure होगा. Okay, however enzymes are isolated from organisms which normally live under extremely high temperatures. Okay,
जिसका एक बहुत ही important example है Taq polymerase. You can just write it down. I don't think they have mentioned it over here in the slide, but it's very important. It comes in in the questions also. कि Taq polymerase, it's a very important enzyme. It's an example of such an enzyme which is isolated from very high temperature. Okay, it's actually isolated from a bacteria known as Thermus aquaticus. Okay, that is the scientific name of the bacteria, and this bacteria is found in hot springs. Okay, I hope you know what are hot springs. They are naturally occurring springs which are having a very high temperature. The water of the spring has a very high temperature. It's usually above the boiling point of water, or around 90 to 120 degrees Celsius. So it's a very high temperature. तो उस हॉट नेचुरल स्प्रिंग में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस, और इसी बैक्टीरिया से ये एंजाइम आइसोलेटेड होता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज. ओके, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन. ओके, so these are stable and retain their catalytic power even at high temperatures, say for example 80 to 90 degrees Celsius. Okay, moving on. Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. So see, वही example यहाँ पे दिया हुआ है. This is actually how the natural hot spring looks like. Okay, and from this hot spring only it's isolated. So let's talk about some important MCQs till now. So almost all enzymes are very important and very easy also. So the right option देखने से पहले ही हम बोल सकते हैं कि right option होगा protein. Moving on to the next MCQ, what are ribozymes? Some proteins that act like enzymes, some antibodies behave like enzymes, nucleic acids behave like enzymes, and last option, carbohydrates behave like enzymes. So obviously the right option will be very easy, option number 3, nucleic acids behaving like enzymes. Now moving on to the next part of this session where we will be talking about chemical reactions. Okay. So chemical compounds undergo two types of changes. So if we talk about a chemical compound that is there, तो उसके साथ दो चीज हो सकता है. एक तो वो फिजिकल रिएक्शन अंडरगो कर सकता है जिसको हम फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे, या तो फिर वो एक केमिकल रिएक्शन अंडरगो कर सकता है. ओके, सो जब हम फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, सो इट सिंपली रेफर्स टू द चेंजिंग शेप, कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर से हमें दिख रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो उसको हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे. उसमें कोई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, कोई केमिकल बॉन्ड का कोई उसमें रिलेशन नहीं है. ओके, अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि वो लिक्विड था सॉलिड हो गया, या सॉलिड था गैस हो गया, या गैस था लिक्विड हो गया, लाइक दैट. ओके, सो दैट विल ऑल्सो बी अ फिजिकल चेंज और अ फिजिकल प्रोसेस. For example, ice melts into water or water turns into vapor. Okay, these are some things we already know. However, chemical reaction हम कैसे define करेंगे? जब there is involvement of either formation or breakage of chemical bonds, then we will call it as a chemical reaction. For example, say for example, ये जो reaction हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH2 जो है, इसका जो chemical name है, that will be बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो react कर रहा है with the सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड. सो एज अ रिजल्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एक तो पानी. Okay, 2 molecules of water will be forming, along with that barium sulfate will be forming. Okay, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले कुछ और कंपाउंड था, अभी कुछ और कंपाउंड बन रहा है. सो हाउ दिस इज हैपनिंग, थ्रू द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. तो इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब ये कभी हमारा बॉडी में नहीं होगा. बट वॉट एवर रिएक्शंस आर हैपनिंग इनसाइड अवर बॉडी, दैट विल बी called as organic chemical reactions, जहाँ पे enzymes will be acting as the organic catalysts or rather the biological catalysts. Okay, so इसी inorganic reaction का एक diagrammatic representation यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, moving forward, similarly hydrolysis of starch into glucose is an organic reaction. So starch से जब glucose बन रहा है, because what is starch? Starch is nothing but a polymer of glucose, isn't it? So not polymer, sorry, it's a polysaccharide which is made up of different glucose subunits, amylose and amylopectin. Those are the two important components or compounds that are present in starch. So जब starch का hydrolysis होगा, मतलब starch जब breakdown हो रहा है starch का, तब क्या होगा, जो simple unit से starch बना है वही simple units हमें मिलेगा.
and those simple units are nothing but glucose. ओके, तो वो रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि वो एक लिविंग सिस्टम के अंदर या फिर एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है, सी दैट एंजाइम इज अमाइलेज. सो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि ये एंजाइम अगर नहीं होगा तो वो ये रिएक्शन सही से नहीं हो पाएगा. ओके, now talking about something called rate of reaction. Now what do you mean by rate of reaction? कि एक जो रिएक्शन हो रहा है वो कितना स्पीड से हो रहा है, कितना टाइम लेके वो रिएक्शन हो रहा है, that is the rate of reaction. So the rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. ओके, मतलब पर यूनिट टाइम में, वो यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है. ठीक है, तो वो यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट्स, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, if the direction is specified then the rate can also be called velocity, and obviously direction it will be specified, कभी reactant से product ही बनेगा obviously. okay, rates of physical and chemical processes are influenced by temperature. Other factors will include pH and substrate concentration. Now these are some of the very important factors which will be affecting the rate of a reaction, or rather also it will be affecting the job or the function of an enzyme. We will be talking about each of these factors in much more details. Let's move forward. So a general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10-degree change in either direction. ओके, मतलब जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री कम हो रहा है या 10 डिग्री ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये रेट जो है वो या तो डबल हो जाएगा या फिर मतलब दुगना जल्दी से होगा या फिर दोगुना कम जल्दी से होगा. So it will be depending on the directly it will be depending on the temperature. मतलब अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो रेट भी कम हो जाएगा. Catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones, and that is exactly the importance of enzyme. क्यों हमें enzyme चाहिए, उसका main reason यही है कि enzyme अगर होगा तो हमारा reaction जो है वो जल्दी जल्दी हो. Okay, when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate is vastly higher than the uncatalyzed reaction. For example, ये जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, सोचो दिस इज ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, एज अ रिजल्ट कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. अब यहाँ पे देखो ये जो एरो है ये दो तरफ दिखा रहा है, मतलब कि क्या, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल मतलब जहाँ पे हम जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला है वैसे अगर प्रोडक्ट से हम लोग वापस रिएक्टेंट तक जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है. ओके, सो सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सम रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया मतलब बन गया, ठीक है, उससे हम दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, प्रोडक्ट से कभी हम रिएक्टेंट वापस नहीं मिल सकता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दो तरफा ये जा सकता है. ओके, in the absence of any enzyme this reaction is very slow with about 200 molecules of carbonic acid formed in an hour. ओके, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्लोली होगा. ओके, which is of no use. जब हमें चाहिए टाइम के अंदर काम होना चाहिए, isn't it? अगर तुम नीट एग्जाम खत्म होने के बाद जाके बोलोगे मुझे अभी एग्जाम देना है, सो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम. सो यू नीड टू बी ऑन टाइम, तो वो चीज यहाँ पे भी है. ओके, however by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds up dramatically with about 60,000 molecules, sorry 600,000 molecules means 6 lakh molecules being formed every second. सोचो कहाँ घंटों भर सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन पा रहा था, और यहाँ पे एक एंजाइम के ऐड कर दिए 1 सेकंड में 60 लाख मॉलिक्यूल बन रहा है. ओके, सो यू कैन इमेजिन hell and heaven difference, isn't it? The enzyme accelerates the reaction rate by about 10 million times. So that is the importance of enzyme. You can understand the power of enzyme is incredible indeed. There are thousands of enzymes, each catalyzes a unique chemical or metabolic reaction. This is exactly what I was talking about in the previous slides also. कि एक enzyme मतलब वो एक ही reaction catalyze करेगा, एक ही substrate के साथ वो जाके जुड़ेगा. Okay, a multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. ठीक है, कि जहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट्स हमें मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल
ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बन रहा है, जो कि एक्चुअली हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. आई थिंक ग्लाइकोलिसिस इज समथिंग which I have already mentioned when I was talking about the unit of biomolecules. So it is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different catalyzed metabolic reactions. Okay, moving forward. At this stage, this metabolic pathway with one or two additional reactions gives rise to a variety of metabolic end products. In our skeletal muscle, under anaerobic conditions, lactic acid is formed. These are some of the concepts I have already talked about in details when I was talking about biomolecules. Okay, and under aerobic conditions, pyruvic acid is formed. So, अगर aerobic condition है मतलब कि बहुत सारे sufficient amount of oxygen is available in the system, तब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, तब दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होगा. और जब एनारोबिक कंडीशन है यानी कि ऑक्सीजन का जरूरत बहुत ज्यादा है, बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तब उसको हम एनारोबिक कंडीशन बोलेंगे. लो ऑक्सीजन लेवल है, तब जो होगा क्या कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जो कि यूजुअली होता है हमारा स्केलेटल मसल्स में व्हेन वी डू अ लॉट ऑफ फिजिकल रिगरस एक्सरसाइज. ओके, तो उसका भी जो एंजाइम्स है वो अलग होंगे. इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल. और अगर हम ईस्ट के बारे में बात करेंगे तो वही सेम प्रोसेस जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं, वही प्रोसेस एंड होगा कैसे, विद द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. मतलब ना तो पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, ना तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, उसके बदले क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल फॉर्म होगा. तो ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में देखा जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन. ग्लाइकोलाइसिस नहीं बोल के उसको हम fermentation बोलेंगे. ओके, hence in different conditions different products are possible और उसमें different enzymes पे involved होंगे. Okay, now let's again see some important MCQs. What is the physical process? Number 1, change in shape with breaking of bonds. Number 2, change in shape without breaking of bonds. Number 2, change in function with breaking of bonds. Number 4, change in function and shape. So obviously the right option will be option number 2, that is change in shape without breaking of bonds. What are the substrates for the enzyme carbonic anhydrase? Very important. The right option will be obviously CO2 and water. That is option number 1. Next MCQ, in our skeletal muscle under anaerobic conditions, dash acid is formed. Okay, very important and very easy question. The right option will be option number 4. That is lactic acid. Okay, now moving on to the last part of this session, that is enzymatic conversion. मतलब कैसे एक एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक लेके जाएगा हमें, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक लेके जाएगा. So how do enzymes bring about such high rates of chemical conversion? We have already have an idea about an active site. Active site किसको बोलते हैं, उसके साथ सबस्ट्रेट आके कैसे जुड़ेगा. These are some of the things which I've already talked about. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. So see, A और B ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो कि AB है. The chemical which is converted into a product is called a substrate. मतलब कि जो आपस में जो रिएक्ट कर रहे हैं उसी को हम रिएक्टेंट नहीं बोल के सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं. ओके, एंड दिस इज एग्जैक्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और वेरी इंपॉर्टेंट इमेज टू मेक यू अंडरस्टैंड. कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एंजाइम है, जो नीचे का ग्रीन पार्ट है, दैट इज द एंजाइम. और इसमें जो जो कर्व्स हमें हमें दिख रहा है, या फिर जो जो ग्रूव्स हमें दिख रहा है, दीज आर बेसिकली द एक्टिव साइट. और जो ऊपर में ऑरेंज या येलो कलर का जो दिख रहा है, दिस इज द सबस्ट्रेट. तो अगर हम देखेंगे कि ये ग्रूव को फिल करने के लिए जो चाहिए, जो शेप का सामान चाहिए, वो एग्जैक्टली हमारे सबस्ट्रेट के पास है. That means this substrate is specific for this enzyme. यही substrate वो substrate है जो ये enzyme के साथ successfully जुड़ सकता है. And exactly that is what is happening in the next step. देखो enzyme substrate एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, तो इसका नाम हम देंगे ES complex या enzyme substrate complex. Okay. इसके बाद क्या होगा, जैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुका होगा, वैसे ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. और एंजाइम है तो बहुत ही जल्दी वो रिएक्शन होगा. रिएक्शन के बाद क्या होगा, देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई विल बी टेलिंग यू ओवर हियर. एंजाइम जो है उसका शेप पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है. सो एंजाइम इटसेल्फ विल नेवर अंडरगो एनी काइंड ऑफ चेंज. कुछ भी हो जाए, चाहे वो जैसा भी रिएक्शन हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, जैसा भी pH हो, जहां भी हो, एंजाइम पहले जैसा था, रिएक्शन के बाद भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. चेंज किसका हुआ है, सबस्ट्रेट का हुआ है.
ठीक है, देखो सबस्ट्रेट पहले एक ही था, पूरा एक ये था, अभी वो बन गया है आधा होके दो दो प्रोडक्ट्स, दो के जगह पे तीन भी हो सकता था, चार भी हो सकता था, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि एंजाइम जो है उसका खुद का कभी कुछ भी चेंज नहीं होता है. ओके, so these are basically 3D structures including an active site which will convert a substrate into a product. So वही चीज बस एनिमेशन करके दिखाया गया है यहाँ पे. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है और अभी ये अलग होके फिर से हमें प्रोडक्ट देंगे. ओके, सो सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. It is now understood that the substrate, which is denoted as S, capital S मतलब substrate, capital P मतलब product, it has to bind the enzyme, और capital E मतलब enzyme, and capital A मतलब active site. Okay, at its active site within a given cleft or pocket. Okay, so फिर से वही एनिमेशन यहाँ पे दिखा रहा है. So there is an obligatory formation of an ES complex. Obligatory मतलब it's compulsory. जैसे ही सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़ेगा वैसे ही it's compulsory कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स बोलेंगे वो बनेगा. E stands for enzyme. This complex formation is a transient phenomena. Transient मतलब वो कुछ permanent नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ES complex बन गया मतलब बस वो बन के ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है. It will soon change to the enzyme and the products. Okay, during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substance called transition state structure is formed. See, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, जो कब बनेगा, जब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट के साथ जुड़ चुका हो. ओके, आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट. सो सी, जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट जो है वो भी हट जाएगा. ओके, in other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of products. The pathway of this transformation must go through the transition state structure, मतलब ये ES complex. There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. Stability is something related to the energy status of the molecular structure. When we represent this pictorially through a graph, it looks like, see, this is a very important graph that you need to understand. Okay, basically ये जो दोनों graphs दिख रहा है, they are the same. ठीक है, तो कोई भी एक graph में अगर फोकस करोगे that will be enough. Okay, so I will be focusing on the right hand side graph. Right hand side वाला graph जो है वो ज्यादा easy है, तो उसी में हम फोकस करेंगे and we will be explaining this graph only. Okay, दोनों graph same है. Okay, so let's focus on the right hand side. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x axis में है progress of reaction और y axis में है potential energy. मतलब कि कैसे रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ेगा. ओके, okay, so now let's focus. So this is the substrate over here. Okay, and this is the product. So जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एनर्जी जो है उसका भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जो काम है वो हो चुका है. ओके, and जैसे ही the process of this formation of this transition state, or rather the process of transformation of the substrate to the product is beginning, जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. Okay, now there are two scenarios that they have shown over here. एक सिनेरियो है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो विदाउट एंजाइम वाला है, और दूसरा जो सिनेरियो है उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो विथ एंजाइम है. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको बोलेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू स्टार्ट. मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, सिर्फ स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन मतलब क्या, वो एक्टिव कर रहा है चीज को. ओके, सो जब एंजाइम रह रहा है तब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम है, isn't it? और जब एंजाइम नहीं है तब एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट डबल है, या इनफैक्ट मोर देन डबल. अगर हम देखेंगे, मतलब एक्यूरेटली अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे विद नॉर्मल कैलकुलेशन, देन वी विल सी दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली मोर देन डबल व्हेन देयर इज नो एंजाइम. सो दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम कम्स इन. ठीक है, सो इट्स एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड and thereby decreasing the time required for the reaction to complete, or rather increasing the reaction rate. Okay, moving forward, the y-axis represents the potential energy content. This is something I've already mentioned, and the x-axis represents the progression of the structural formation of states through the transition state. So
अगर ये जो P है, लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस ग्राफ, तो इसमें दिखा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? अगर P यानी कि जो प्रोडक्ट है, ओके, जिसको C के हिसाब से यहाँ पे दिखाया है, प्रोडक्ट जो है ये अगर सबस्ट्रेट के नीचे है, सो A प्लस B मतलब जो रिएक्टेंट्स है दे आर द सबस्ट्रेट, ओके, तो A और B के नीचे अगर P का एनर्जी लेवल आ रहा है, उसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट लॉस हो रहा है, मतलब कि हीट बाहर जा रहा है, हीट का ज्यादा जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर जा रहा है। सो देखो वही यहाँ पे दिखाया है, हीट आउट मतलब हीट बाहर निकल रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट हीट इज गेटिंग आउट, सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो हम कब बोलेंगे? जब जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल वो नीचे रहेगा देन द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट्स। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, endothermic मतलब exactly उल्टा कि हीट चाहिए, हीट रिलीज तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा हीट हमें ज्यादा करके चाहिए। सो व्हाट इज हीट? हीट इज नथिंग बट एनर्जी। सो जो एंडोथर्मिक एनर्जी होगा या सॉरी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसको हम एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कि अगर हीट या एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ओके। सो एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, मतलब चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल होगा वो ज्यादा होगा ही। सी दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हमेशा ऊपर के तरफ होगा, ठीक है। जी मतलब क्या? गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज समथिंग important concept in chemistry or rather physics and thermodynamics. So thermodynamics, I think it's in inorganic chemistry, not in physics, so that's a totally different concept of chemistry, so I think you already know about it. If you don't know, so please refer to your chemistry lessons or chemistry teacher, okay. So basically यहाँ पे हमें इतना ही समझना है कि सबस्ट्रेट जो है उसका एनर्जी लेवल हमेशा ज्यादा होगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेम ही चीज दिखाया है, ठीक है, एक जगह में एंडोथर्मिक है, एक जगह में एक्सोथर्मिक है। These are the graphs which I have already discussed. Now let's come to the MCQs. The chemical or metabolic conversion refers to number one, substrate, reactant, byproduct, reaction. So obviously the right option will be reaction. The chemical which is converted into a product is substrate, reactant, byproduct, reaction. So see यहाँ पे actually सही आंसर substrate भी है और reactant भी है, लेकिन obviously we have to choose one right answer. So obviously the more appropriate answer will be substrate. Okay, in nature of enzyme reaction, E plus S, ES, फिर वहां पे EP आएगा, फिर E प्लस E आएगा, तो इसमें E मतलब क्या? ऑब्वियसली इट विल बी एनर्जी, ओके। E प्लस S, S मतलब सबस्ट्रेट, सो E और S एक साथ रिएक्ट करेंगे या जुड़ेंगे, जुड़ के ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर वहां से EP यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जाके एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, okay. So that is the concept over here, okay. So I think that's it regarding the introduction of enzymes. Soon we will be moving on to the next session. Till then, thank you and goodbye. Please stay tuned.